1970 में by Indian Council of Social Sciences and Research. Purpose was to provide research-related facilities to various readers in social science field, provide various library services, reference services, and documentation services. In social science, this center also compiles unpublished research articles, reports, and journals, scholarship, and other facilities publications, had Directory of Social Science Library and Information Centers in India, Directory of Social Science Research and Training Institutions and teaching and research institutions in India on Asian studies. Union Catalog on Social Science periodicals, CD-ROM database भी है. DESIDOC, that is Defense Scientific Information and Documentation Center. So DRDO के द्वारा बनाया था ये and 1958 New Delhi, operated by Defense Ministry to provide research-related facilities to various research scholars in defense field. Publications at DRDO newsletter, DRDO Samachar, DJ Lit, that is Desidog Journal of Library and Information. Okay, so Desidog Journal of Library and Information Technology, DJ Lit. Defense of Life Science Journal quarterly, Defense Science Journal bi-monthly. So जो डिफेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है वो डेसिटॉक है. Publications DRDO 1958 में बना था. Delnet Development Library Network establishment है 1988 में as India International Center Library. So 1992 में registration was done in collab of NISAT and main task is to create a union catalog. So developing library network का main task है union catalog बनाना and to establish national network by connecting different type of libraries. Purpose है एक subscription से सभी को resources मिल पाएं. Delnet provide important e-resources to various educational institutions and membership of Telnet. Annual fees लगती है. Telnet organize a national conference every year, that is NASLIN, National Convention on Knowledge Library and Information Networking. फर्स्ट न्यू दिल्ली के अंदर 28 आई थी, पुणे के अंदर हुई थी नेस्लिन की ये कन्वेंशन एंड 26 में हुई है हैदराबाद में. Sendoc Small Enterprise National Documentation Center Hyderabad work for National Institute of MSME 1970 में Sendoc बनी थी for the small enterprises and the work is to collect, store, disseminate technology managerial information and to conduct need and demand based training programs. Publication है Segment Journal. ENVIS Environmental Information System by Environmental Ministry. ENVIS was implemented by Ministry by the end of 6th 5th year plan as a plan scheme for environmental information collection, storage, retrieval and dissemination of policies, planners and decision makers, scientists, environmentalists, planners, decision makers, scientists, environmentalists. It decentralized the computerized network database. 76 ENVIS के centers हैं, 76 हैं. It developed Indian state level basic environmental information database. So ENVIS is related to the environment and National Informatics Center जो 1977 में बना है under the Planning Commission. Almost every district headquarter has NIC centers and ये Ministry of Electronics and IT के अंदर है. Provide IT services, deliver initiative of Digital India. Dr. N. Sheshagiri, first to introduce a network system in India. Okay, so NIC NET है 1987 के अंदर N. Sheshagiri ने दिया था. NIC data centers.
So New Delhi, Hyderabad, Pune, and Bhubaneswar में National Informatics Center contains Constitution of India and claims to have a design objective to a single point to access the information and services of Government of India. National Knowledge Network, March 2010 में NKN is a multi-gigabyte national research and educational network purpose है to provide a unified high-speed network born for educational so National Knowledge Network this is for high-speed network provide करने के लिए for the educational institutions. It is a hierarchical network divided into three basic layers: core, distribution, and edge. And high speed network provide करता है managed by NIC. So Garud built using NKN as a its network backbone, global access to resource using distributed architecture. High-speed national-wide computer network designed specifically for research and academic institutions. Used for grid computing, that is, it links many computers together to act like one supercomputer to solve complex engineering and scientific problems. Garuda global access to resource global access to resources using distributed architecture है. High-speed nationwide computer network designed specifically for research and academic institutions and used for grid computing. That is, it link many computers together to solve complex engineering and scientific problems. Most important is ये NKN की यूज से बना है. Net Education and Research Network UNDP 1986 में by the Department of Electronics become Autonomous Scientific Society, today serving more than 1300 institutions. First educational computer network in India. Email services पहले ये क्या and activities of EarNet National Academic and Research Network बनाना research and development in the areas of data communication, HR development, educational contents, education and research, campus-wide high-speed fight करना InflibNet बना है 1991 में 27 Feb को for information and library network. Established as a project under IUCAA, that is Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So Ahmedabad में बना था, but headquarter is in Gandhinagar. सबसे पहले तो astronomy से related work करता था and is the biggest research center of India today. Present director है Devika Madali. So Devika Madali is the अब open access like शोध गंगा होगा इसके शोध गंगोत्री शोध चक्र ओजस एंड इन्फोपोर्ट जो सबके लिए ओपन नहीं है लाइक इंडिकैट सो शोध गंगा शोध गंगोत्री शोध चक्र ओजस इन्फोपोर्ट Autonomous Inter-University Center for UGC 4 regional centers हैं document delivery centers
DDC of InfluBnet. So document डिलीवरी सेंटर्स कौन कौन से हैं? हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIS Bangalore and Tata Institute of Social Sciences TIS. UGC के मैक्सिमम प्रोजेक्ट इन्फ्लिबनेट चलाता है. ओके, प्रोजेक्ट्स ऑफ इन्फ्लिबनेट: शोध गंगा, शोध गंगोत्री, एक्सेस वाले शोध शुद्धि है, शोध चक्र, ओजस है और इन्फोपोर्ट. शोध चक्र ओपन एक्सेस है, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन मार्च 2010 के अंदर बनी थी. शोध गंगा, where PhD students from all over the world, all over the India deposit their research papers. As per UGC notification, it is mandatory to submit e-version of thesis and dissertation by research universities. And show the Gangotri open access repository that have approved research proposals. ठीक है, ई शोध सिंधु ये 2015 में बाय इन्फोनेट ने और एनलिस्ट और इनटेस्ट. So Infonet, Endless और Indus ने मिलकर बनाई थी. Consortium initiated by Education Ministry that provide higher education institutions access to over 10,000. Okay. E-शोध सिंधु facilitate करता है access to scholarly resources at reduced subscription rates. So E-शोध सिंधु. So research के लिए resources. शोध शुद्धि, शुद्धि में क्या आएगा? 19 में आई है प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर 2019. पहले उर्कुन था, अब ड्रिल बिट एक्सट्रीम. और जस्ट ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम. सो ये स्टॉप बाय इन्फ्लिबनेट 31 मार्च 2018 में हुआ था. ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. सो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है 2015 में ही आया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. और इम्प्लीमेंट पैरामीटर्स कौन से हैं? टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम एंड परसेप्शन. विद्वान, डिजिटल डायरेक्टरी ऑफ रिसर्चर, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी मेंबर्स है. फिर है विद्या मित्र फॉर ऑल ई कंटेंट अनडेवलप्ड अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री. ठीक है, विद्या मित्र में कंटेंट मिलेगा. एनलिस्ट, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट. सो शोध सिंधु में एनलिस्ट है, एनलिस्ट है और इन्फोनेट है. एनलिस्ट, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट. प्रोवाइड ई रिसोर्सेज. स्वयं स्टडी, अभी क्लास 9 से PG लेवल. स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स डेवलप्ड बाय MHRD AICTE. उसके बाद में इन्फिनेट सेंटर है, एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर ऑफरिंग 7 courses in LIS on Swayam. It started in November 2017 and it is a nodal agency for offering 7 courses on LIS. इन्फिनेट सेंटर है, ये कोर्सेज लाइब्रेरी साइंस प्रोवाइड करता है ऑन स्वयं. स्वयं प्रभा है DTH वाले. सो इस तरह की GSAT सैटेलाइट यूज होती है. स्वयं प्लस, सो by धर्मेंद्र प्रधान. It aims to achieve a higher education. So जो जोड़े नहीं थे वो इसमें ऐड कर देगा.
Okay, so जो GR ratio है 2035 तक 15% करनी है and 2047 तक 65%. IndCat, Indian Catalog. So this is a free online consortium catalog of books, dissertations, and reviews. Online consortium है IndCat and means source of bibliographic information are used for interlibrary loan हो गया, collection development, transcriptional cataloging and bibliography. Soul 3.2, so Soul के अंदर 2009 में आया है. Two thousand nine. Caliber. Caliber is the Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions. 14वां हुआ था श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी आंध्रा में. कैलिबर एंड जो प्लानर है ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस हैं. So this is the Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions. Convention on Automation of Library and Information Libraries in Education and Research Institutions. तो जो प्लानर है, प्लानर कॉन्फ्रेंस ये अरुणाचल में थी. ये पीछे पाठशाला 2014 इन्फोपोर्ट ओपन एक्सेस है, डीडीसी का कोडिंग करता है. इनफ्लिपनेट सेंटर promote open access to Indian scholarly material through Infoport. So Inflinet का पोर्टल है to promote open access. Show the chakra. This provides a unique space to the researchers to manage the research life cycles of a research scholar. इसमें researcher can collect, store and organize and cite their research works ताकि कभी भी एक्सेस कर पाए. अच्छा, शोध चक्र, रिसर्च लाइफ साइकिल, शेरनी शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया. International Information Centers to assist Human Information System in Science and Technology. World's first international system. 1973 में बना था यूनिसिस्ट. यूनिसिस्ट का एक सेंटर इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर, दैट इज निसाद. सो और 2002 में निसाद INIS इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सर्विसेज वीना में है. लार्जेस्ट कलेक्शन न्यूक्लियर साइंस. इसकी है एटॉमिक इंडेक्स. So Atomic Index is the project of INIS, that is International Nuclear Information System. India is the founding member of INIS. India में center at BARC. So BARC में center है INIS का. फिर देखते हैं Agriculture Information System. 1975 में रोम में आया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. एग्रीज इंडिया का कौन है. Provide free access to bibliographic information on agriculture sciences in 90 languages. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ये
एक रिस्क को इंडिया के अंदर मैनेज करता है. एंड इंस्पेक इंफॉर्मेशनल सर्व Indian Information Service for Physics, Engineering and Computer. So database है scientific literature का. मतलब 1964 में था. 1937 में Medline Medicus Medline and 1983 में है. और Medline था 1964 में. Education Resources Information Center 1960 में. OCLC, this is important. 1967 में आया. American Entrepreneur DDC is maintained by WorldCat. So headquarter है Dublin, Ohio में. Ohio College Library Center में ये start हुआ था. Alden Library, first library to do the online cataloging through OCLC, was the first online cataloging by any library. Project OCLC का WorldCat. Web Junction और वाइज है. ग्रीन ग्लास कंटेंट DM कैट एक्सप्रेस जो सिंडियो है. वाइज ग्रीन ग्लास कंटेंट सर्विसेज के लिए कैट एक्सप्रेस DB सर्विसेज एंड सिंडियो. वर्ल्ड शेयर डिस्कवरी टू डिलीवरी D2D तो हो गई. So information sources, all those persons, things, documents through which we get information are called information sources.